Hello everyone, this is Dr. CJ Tak, and here we will discuss about the drug interaction in the subject pharmacy practice, subject code BP703TT. So here in last lecture we have discussed about the classification of adverse drug reaction. We are studying this drug interaction in the chapter adverse drug reaction. So we have classified it. Adverse drug reaction they are due to the following reason. Accordingly, they are classified as excessive pharmacological effect. We discussed this point. Secondary pharmacological effect, idiosyncrasy, allergic reaction, genetic makeup of the patient, sudden drug withdrawal, and drug interaction. So now, currently, we are in this video, we are discussing about the drug interaction. See, again, drug interaction can be defined as the modification of the effect of one drug. It means the object drug by the prior or concomitant administration of another drugs. It means the precipitant drug. मतलब यहाँ पे क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि ड्रग इंटरेक्शन हम किसे कहते हैं कि इट शोज द मॉडिफिकेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ वन ड्रग मतलब जो पहले हमने कोई एक ड्रग दिया है विच इज ऑल्सो नोन एज द ऑब्जेक्ट ड्रग, उसकी इफेक्ट मॉडिफाई हो और बाय द प्रायर और कॉन्कमिटेंट, मतलब कि पहले से हमने एक दूसरी ड्रग दी है या फिर वी आर गिविंग concomitant, that means we are associatedly we are giving one another drug with this, that is also known as a precipitating drug. By this there will be the modification of effect and this is known as a drug interaction. Drug interaction may either enhance or diminish the intended effect of one or both the drugs. मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर हमने ड्रग इंटरेक्शन अगर हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे या तो ड्रग की जो भी दो ड्रग हमने दी है उसकी इफेक्ट एनहेंस होगी या फिर डिमिनिश, और वी कैन से देयर माइट बी द साइनर्जिस्टिक इफेक्ट और देयर माइट बी द एंटागोनिस्टिक इफेक्ट ऑफ दिस टू ड्रग्स. The interaction may modify the diagnostic, preventive or therapeutic activity of either drugs. For example, severe hemorrhage may occur if warfarin and salicylates are combined. See, over here, one of the example has been given of warfarin and salicylate. See, the drug interaction, it can modify the diagnostic, preventive or therapeutic activity. मतलब अगर हम यहाँ पे drug interaction हो रहा है तो therapeutic activity यहाँ पे drug की modify होगी. See, the example, warfarin, it prevents the blood clots and it helps to reduce the risk of heart attack. And salicylates, जो यहाँ पे दूसरा drug है salicylate, इसके साथ में अगर हम देते हैं तो salicylates mainly it is used to treat the pains of muscle and joints. So over here the combination of these two drugs warfarin and salicylate, अगर ये दोनों ड्रग एक साथ में लिया जाए then there is a chances or we can say there is the possibility of severe hemorrhage because salicylate, यहाँ पे जो salicylate हम देते हैं salicylate it increases the effect of warfarin by affecting vitamin K metabolism or by displacing warfarin from the protein binding sites. So due to that the effect of warfarin that is going to be raised and due to that there is the chances of severe hemorrhage. So this is one of the fundamental or the basic example of the drug interaction. Causes of drug interaction. First one, drug explosion, administration of two or more drugs simultaneously. Drug explosion, it is a common practice to prescribe more drug at a time. मतलब क्या होता है कि more drug, एक से ज्यादा drug, more than two or more drugs simultaneously बहुत बार दी जाती है पेशेंट को. देखिए, as many 14 drugs have been reported to be prescribed at a time in cardiovascular disease. कार्डियोवास्कुलर डिसीज के अंदर बहुत बार एक साथ 14 ड्रग्स प्रिस्क्राइब हो जाती है. दिस इज समटाइम रिफर्ड टू एज अ थेराप्यूटिकल जंगल और दिस इज आल्सो नोन एज अ पॉलीफार्मेसी एंड दिस इज वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ ड्रग इंटरेक्शन. मतलब यहाँ पे क्या है, थेराप्यूटिकल जंगल हो जाएगा, बहुत सारी ड्रग एक साथ
डॉक्टर से उन्होंने प्रिस्क्राइब कर दी है कि देखिए कार्डियोवास्कुलर डिसीज में क्या होता है बहुत बार कि एक साथ 14 ड्रग्स एक साथ प्रिस्क्राइब हो जाती है। तो यहाँ पे ऐसे केस में देयर इज हायर चांसेस और वी कैन से इट इज वन टाइप ऑफ ड्रग एक्सप्लोजन। एक साथ बहुत सारी ड्रग दे दी गई है तो यहाँ पे ड्रग इंटरेक्शन होने का चांसेस मैक्सिमम है। देन पेशेंट मे रिफर मेनी डॉक्टर्स, मतलब sometimes the patient he is not satisfied with one doctor and in such a condition he will consult one another doctor without informing that he has consulted first another doctor। so यहाँ पे क्या होता है कि ऑलरेडी पेशेंट है वो अगर कोई एक डॉक्टर को दिखा रहे तो उसके बाद वो दूसरे डॉक्टर को भी दिखाएंगे। अगर वहां पे पर्टिकुलर टाइम में क्योर नहीं हो रहा है तो पेशेंट क्या करेगा कि वो दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा। तो यहाँ पे क्या है दूसरे डॉक्टर को बताते नहीं कि भाई आई हैव टेकन द ट्रीटमेंट फ्रॉम द दिस वन डॉक्टर। सो इन सर्टेन कंडीशन डॉक्टर्स दे आर नॉट अवेयर अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पेशेंट। सो इन सच अ कंडीशन देयर इज अ हायर चांसेस, वी कैन से देयर इज अ हायर चांसेस ऑफ ड्रग इंटरेक्शन। देन इसके बाद है इर्रेशनल पॉलीमॉर्फिज्म। इर्रेशनल दैट मींस illogical polymorphism, polypharmacy, irrational polypharmacy, concurrent use of prescribed and non-prescribed drug. That means at the same time, concurrent use. That means at one time there is a use of prescribed and non-prescribed both the drug. जो ड्रग प्रिस्क्राइब की है उसका और जो प्रिस्क्राइब नहीं की है वो दोनों ड्रग का यूज एक साथ अगर किया जाए। देखिए यहाँ पे बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट ऑलरेडी पेशेंट ने कोई ड्रग अगर चालू है तो ऐसी कंडीशन में सिंपली देखिए अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें कि हार्ट डिसीज है तो हार्ट डिसीज के लिए कोई भी एक ड्रग ऑलरेडी द ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन और यहाँ पे अगर पेशेंट को हेडेक है तो वो कोई एक पर्टिकुलर ड्रग ओवर द काउंटर ड्रग सीधी ले लेंगे। दैट मीन्स दैट इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड इवन दो ही विल टेक। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रिस्क्राइब्ड और नॉन प्रिस्क्राइब्ड ड्रग के बीच में देयर माइट बी द चांसेस ऑफ ड्रग इंटरेक्शन। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है कि एस्पिरिन, पेशेंट ही इज टेकिंग एस्पिरिन एंड व्हिच आर अवेलेबल विदाउट फिजिशियंस प्रिस्क्रिप्शन। इन सच अ कंडीशन इफ द पर्सन इज ऑलरेडी taking the digoxin, so in this condition there is a chances of heart failure, or we can say there is a chances of drug interaction. For example, aspirin that is used in a pain or fever and it is an anti-inflammatory drug and used as a blood thinner also, and digoxin that is used in a heart failure. So here due to the combination digoxin level it will be raised or the absorption of digoxin that will be increases. So naturally there will be the chances of drug interaction. But यहाँ पे क्या है कि पेशेंट को ये मालूम नहीं है, पेशेंट को क्या है कि भाई मुझे हेडेक है, मैंने ये मेडिसिन ले ली और ऑलरेडी उनका एक ड्रग चालू है, तो यहाँ पे पेशेंट को मालूम नहीं रहता। तो ये भी एक वन ऑफ द रीजन हो सकता है ड्रग इंटरेक्शन होने का। देन पेशेंट्स नॉन कंप्लायंस। देखिए समटाइम the patient does not comply with the instruction that is given by the physician and may take food material which is prohibited. देखिए बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट को डॉक्टर ने जो भी प्रिस्क्राइब किया है मेडिसिन के साथ कि भाई ये चीजें खानी है आपको, ये चीज नहीं खानी है, तो पेशेंट बहुत बार क्या होता है कि वो भूल जाते हैं कि भाई क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई पर्टिकुलर चीज उन्होंने ले लिया है या फिर पर्टिकुलर जो भी हार्मफुल है ऐसी कोई चीज उन्होंने खाने में ले लिया है तो इस कंडीशन में देयर माइट बी द चांसेस ऑफ ड्रग इंटरेक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल हम दे सकते हैं, मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर एंड इफ द ट्रीटमेंट ऑफ मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर दैट इज गोइंग ऑन एंड विद दिस इफ द पेशेंट इज टेकिंग चीज, देखिए मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर that is one type of antidepressant and it is a very powerful antidepressant and last line of drug we can say. So in this condition if he is taking cheese, the patient is taking cheese, now this cheese it contains the tyramine which can cause the hypertensive crisis and it can increases the blood pressure. So
if patient already he is taking the treatment of such an antidepressant, MAO inhibitor if he is taking, and in such a condition if he is taking in a food cheese or he is eating cheese, then in such a condition there is a chances of hypertensive crisis or it can increase in blood pressure. So यहाँ पे क्या है कि पेशेंट्स नॉन कंप्लायंस, पेशेंट को पहले से बोल दिया जाता है कि भाई ये चीज आपको लेनी नहीं है, ये आपको खाने में नहीं लेना है, फिर भी अगर पेशेंट ही इज टेकिंग सच अ फूड, देन देयर माइट बी द हायर चांसेस ऑफ ड्रग इंटरेक्शन. सो वी कैन से दीज आर द basic or we can say these are some of the cause that initiate the drug interaction. देखिए यहाँ पे अगर हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन और ड्रग इंटरेक्शन ये दोनों के बीच का डिफरेंस अगर देखें तो ड्रग इंटरेक्शन दैट इज नोन टू अस, ठीक है. ड्रग इंटरेक्शन दैट इज वी कैन से दैट इज द साइड इफेक्ट एंड वी ऑलरेडी नो अबाउट दिस, बट एडवर्स ड्रग रिएक्शन दैट इज अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन. Now, factor predisposing to drug interaction. Factor predisposing that means make someone inclined towards the specific attitude towards the drug interaction. मतलब यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसे फैक्टर कि जो इंक्लिनेशन करते हैं, अगर ये हमने अंडरस्टैंड नहीं किए, अगर हमने इसको कंसीडर नहीं किया, then it will initiate or it will inclined towards the drug interaction. First one, insufficient knowledge, insufficient or inadequate understanding of the pharmacokinetic and pharmacodynamic of the drug, it will initiate the drug interaction. मतलब यहाँ पे अगर पेशेंट को मालूम नहीं है तो फिर फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर को they are not aware about the pharmacokinetic and pharmacodynamic of the drug, then there is a higher chances of the drug interaction. Then second one, that is the dietary factor. Dietary factor that means constituent of individual's diet, including foodstuff, then vegetables, etc. This can interact with the certain drugs. So here the dietary factors that is also considerable. So patient he should be known to such dietary factors. Then physiology of the individual. देखिए अगर physiology हम consider करें तो यहाँ पे we can consider about the age, about the sex, about the weight of the patient, and also we need to consider about the genetic abnormality that can affect or that can influence the occurrence of the drug interaction. तो यहाँ पे अगर age है, sex है, weight, ये सभी फैक्टर को कंसीडर करना पड़ेगा. मतलब फिजियोलॉजी फैक्टर that is also physiology of the patient that is also considerable point towards the drug interaction. Then presence of disease state. See, if the patient is already having any pathological condition like liver disease, or he has a kidney damage, or he has any altered enzyme system, so this will affect directly or it will result into the adverse drug reaction. तो यहाँ पे presence of disease state, जो भी disease अगर condition है तो इसके बारे में डॉक्टर को मालूम होना चाहिए या फिर फार्मासिस्ट को मालूम होना चाहिए, या फिर पेशेंट ही शुड गिव द थरल इंफॉर्मेशन टू फार्मासिस्ट और टू द डॉक्टर्स. सो दीज आर सम predisposing to drug interaction, some factor predisposing to drug interaction. Well, some over 1600 potential drug interaction they have been described in a man. मतलब 1600 से ज्यादा या फिर 1600 there is a potential drug interaction. Many of them are of great clinical significance, and if we are considering about the harmful interaction, they can occur in between the drug, also in between patient and drug food stops. Now considering the clinical significance, drug interaction can be beneficial drug interaction and adverse drug interaction. अगर हम कंसीडर करें यहाँ पे अगर हम क्लिनिकल सिग्निफिकेंस को अगर कंसीडर करें, then drug interaction we can divide the drug interaction in two category. First one, that is a beneficial drug interaction, and second one, that is a adverse drug interaction. See, we will discuss this
beneficial drug interaction. Some drug interaction may be desirable. बहुत बार ऐसा होता है कि interaction है in certain condition it is desirable, and the combination of medication it produces improved therapy. बहुत बार ऐसा भी होता है कि दो ड्रग अगर साथ में दिया है, this is one type of interaction, but even though they are producing good result or they can improve the therapy and they can give the good duration of action, and it can lower the toxicity or enhance the potency with the diminished side effect. That means यहाँ पे side effect भी हम reduce कर सकते हैं अगर एक से ज्यादा ड्रग हमने मतलब दो ड्रग को एक साथ में हमने दिया, then we can do such a things, and this is known as a intentional drug interaction. मतलब हमको पहले से यहाँ पे मालूम है कि ये ड्रग के बीच में इंटरेक्शन है, even though we have prescribed this medication, because they are lowering the toxicity as well as they can enhance the potency with reducing side effect with decreased side effect. We will see some example. For example, anti-tubercular agent rifampicin and isoniazid that is used in a tuberculosis in a TB, and they can improve the compliance of the patient. Then ferrous sulfate and folic acid, these are the iron supplement and which can be given to the pregnant woman, so this is also improved compliance. Then ease of administration, if we are considering about the advantage of such a combination, or we can say about the intentional drug interaction, or we can say the beneficial drug interaction, then triple vaccine that is also beneficial. एक साथ यहाँ पे 3 वैक्सीन diphtheria, pertussis and pertussis, that is also known as a whooping cough and tetanus. So this triple vaccine, this is for ease of administration. Then synergistic effect, trimethoprim and sulfamethoxazole. Sulfamethoxazole, that is antibiotic, and for a bacterial infection it is given. Then aspirin and codeine. Aspirin and codeine, this combination mainly it is given for a toothache, also for a headache, and in case of severe migraine. This combination, this synergistic effect, that is given specially in case of migraine also. Then estrogen and progesterone, this is oral contraceptive. They are given in a combination for a synergistic effect. Then decreased adverse effect. To decrease or to reduce the adverse effect of the product, we are giving the combination of levodopa and carbidopa. This combination that is used to treat the symptoms of Parkinson disease. Then another one, that is the aluminium salt and magnesium salt. These are in a combination, or we can say is a synergistic effect. They are given as a antacids. Then adverse drug interaction. They are simply, we can say, they are the drug-drug interaction, and they can counteract or adversely alter the therapeutic effect of prescribed medication. This may occur because of an error in prescribing, dispensing, or administering, whereby combination of the drug with the potentiating, inhibiting, or opposing physiological effect are introduced into the body at the same time. देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमने कोई ड्रग मेडिकेशन प्रिस्क्राइब किया है, then it will potentiate, it will inhibit, or it might give the opposing physiological effect and to our body. So that is known as a adverse drug interaction. And adverse drug interaction may sometimes be eliminated or reduced to an acceptable intensity by altering the dosage. If we want to remove this, अगर हमको ये डिक्रीज करना है या फिर इनको रिमूव करना है, then we can alter the dose. But if serious effect can occur, it is usually safer to avoid the interacting combination entirely. मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर हमें इसकी adverse drug interaction reduce करनी है, then in such a condition we can reduce the dose. But even though it might give the serious effect or it might give the adverse drug interaction, so in such a condition always it should be done that it should be avoided. Such type of interaction it should be avoided in a combination entirely. मतलब उसको totally remove कर देना चाहिए अगर हमको मालूम है कि ऐसा अगर adverse drug interaction है
इन दो ड्रग के बीच में, तो इन सच ए कंडीशन द कॉम्बिनेशन शुड बी अवॉइड. We will see the example here again. Hypertensive crisis example that is given, the symptoms due to the interaction of the drug, for example MAO inhibitor and tyramine, that is due to the presence of cheese. There is a chances of major symptoms, we can say that is the hypertensive crisis. Then same way MAO plus methamphetamine, that is a one of the CNS stimulant that is banned in many countries nowadays, and that is also used, methamphetamine that is used in obesity because it reduces the hunger. methamphetamine है वो hunger reduce करता है. ये बहुत सारी कंट्री में अभी बैन हो गए. यूएस कंट्री में भी ये ड्रग नहीं चल रहा है, या वहां पे भी बैन हो गए क्योंकि so many people they are using them as a CNS stimulant. Then warfarin and phenylbutazone, that is one type of NSAIDs, and warfarin and sulfenpyrazone that is used to treat the gut. So this combination also they gives the hemorrhagic episode. Then tolbutamine and phenylbutazone, it induces the effect of tolbutamine. Phenylbutazone, it will induces the effect of tolbutamine. So here it will induce, or we can say it will solve the hypoglycemic reaction. Same way tolbutamine plus sulfasalazole, that is the antibacterial, and this give hypoglycemic reaction as a adverse drug reaction. Then digitalis and chlorothiazide, that is one type of diuretic. Here potassium in the blood, it will be decreased due to the effect of chlorothiazide, and due to that there might be the chances of cardiac arrhythmias, and likewise digitalis and reserpines. Then neomycin and succinylcholine increased risk of muscle function loss. And neomycin we can say that is one type of aminoglycoside antibiotics. So these are the given in a combination. When these are given in a combination, then always there is a chances of the or we can say there is a problem of breathing to the patient, or we can say there is a respiratory paralysis to the patient. And same way neomycin and ether, that is the use as a anesthetic agent. So these are some of the adverse drug interaction. यहाँ पे मेजर सिम्टम्स भी है, मतलब ये ड्रग अगर इंटरेक्ट होगा, अगर ये कॉम्बिनेशन में दिया गया, देन such type of symptoms will be observed. Then types of drug interaction. See, depending on the type of the effect that is produced, drug interaction, देखिए यहाँ पे क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होगी. अगर कोई ड्रग हमने दिया है तो उसका जो भी इंटरेक्शन हो रहा है उससे क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होगी, उसके मुताबिक यहाँ पे there is a classification. One of the classification is given: inhibiting drug interaction, potentiating drug interaction, and modifying drug interaction. We will see one by one. First one, inhibiting drug interaction. An inhibiting interaction partially or completely prevents a drug from exerting its action. मतलब यहाँ पे क्या है, इनहिबिट, कोई ड्रग की इफेक्ट इनहिबिट होगी. इनहिबिटिंग इंटरेक्शन पार्शियली और कंप्लीटली प्रिवेंट्स अ ड्रग फ्रॉम exerting its action, thus diminishing its effect in the patient. मतलब यहाँ पे diminish इफेक्ट नहीं आएगी, यहाँ पे इनहिबिट करेगा मतलब यहाँ पे इफेक्ट नहीं आएगी. फॉर एग्जांपल एंटागोनिज्म, इसको particularly we can understand with this antagonism इफेक्ट यहाँ पे पहले तो आएगी. एंटागोनिज्म मतलब a type of inhibiting interaction that occurs when a drug with a given activity is blocked by a drug with a nullifying action. मतलब एक ड्रग हमने यहाँ पे दिया है, that is given activity is blocked by, and in such a condition such a activity that will be blocked by the another drug and which will nullify the action of first drug. मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एम्फीटामाइन एंड बार्बिटूरेट. देखिए यहाँ पे एम्फीटामाइन एंड बार्बिटूरेट अगर हम इसको कॉम्बिनेशन में देते हैं ये प्रोडक्ट को, देन एम्फीटामाइन that is a CNS stimulant and barbiturate that is the
CNS depression. That means the effect of amphetamine that will be nullified by the effect of CNS depression. मतलब न तो एम्फेटामाइन की इफेक्ट आएगी न तो बार्बिचुरेट की इफेक्ट आएगी. देखिए बहुत बार प्लासेबो इफेक्ट के लिए इसका हम यूज कर सकते हैं. सो यहाँ पे इनहिबिटिंग ड्रग इंटरेक्शन मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एंटागोनिज्म, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट आ गई. एम्फेटामाइन न तो एम्फेटामाइन की इफेक्ट आ रही है, एम्फेटामाइन दैट इज अ CNS स्टिमुलेंट एंड बार्बिचुरेट दैट इज द CNS डिप्रेशन. तो यहाँ पे दोनों में से किसी के भी इफेक्ट नहीं आएगी. सो दिस इज इनहिबिटिंग ड्रग इंटरेक्शन. Then potentiating drug interaction. A potentiating interaction enhances the toxic or therapeutic effect of a drug in a patient. For example, synergism, a type of potentiation. देखिए यहाँ पे क्या होगा, synergistic effect. Synergistic effect, that means there will be the modification of absorption, distribution, metabolism and excretion of drug, particularly at the receptor site. So, the type of potentiation that will occur when the combined effect of two or more drugs acting simultaneously is greater than the sum of the individual effect. मतलब यहाँ पे दो ड्रग हमने दिया है, तो ड्रग A और ड्रग B अगर इंडिविजुअली इसको हम देते हैं तो उसका इफेक्ट इतना नहीं आएगा. बट इफ यू आर गिविंग इन अ कॉम्बिनेशन A plus B, then the effect it will be higher. So, when यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है, एनाबोलिक एजेंट प्लस ओरल एंटीकोगुलेंट. एनाबोलिक एजेंट दैट स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ बॉडी टिश्यू एंड प्लस ओरल एंटीकोगुलेंट. मतलब यहाँ पे क्या होगा, साइनर्जिस्टिक इफेक्ट या फिर साइनर्जिज्म में यहाँ पे अगर हम कॉम्बिनेशन में दो ड्रग देते हैं तो वो दोनों की इफेक्ट आएगी और दोनों की इफेक्ट आएगी एक साथ में. तो यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअली अगर हम दो ड्रग अलग अलग ड्रग देते हैं तो उससे अच्छा है कि वो दोनों ड्रग को हम कॉम्बिनेशन में दे दे, इससे इसकी इफेक्ट ज्यादा आएगी. तो दिस इज नोन एज अ पोटेंशिएटिंग ड्रग इंटरेक्शन. देखिए ये भी एक टाइप है ड्रग इंटरेक्शन का. इससे क्या हो सकता है, बहुत बार क्या होगा कि देयर माइट बी द चांसेस ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ अ ड्रग इन अ पेशेंट. देन मॉडिफाइंग ड्रग इंटरेक्शन. There exists a heterogeneous group that modifies the action and effect drugs in other way to produce injurious effect. देखिए यहाँ पे heterogeneous group, अगर कोई heterogeneous group है then it will modify and due to that there might be the chances of injurious effect. For example, the combination of potent carbonic anhydrase inhibitors such as acetazolamide and high dose of trimethyl amiloride or other drugs causing the potassium retention are highly teratogenic in test animal and therefore such a combination should not be given during the pregnancy. देखिए यहाँ पे अगर ये combination हम अगर देते हैं acetazolamide and trimethyl, then in trimethyl or amiloride, then in such a condition there will be potassium retention and they are teratogenic. So such a combination should be avoided in case of pregnancy. So this one is a modifying drug interaction. Then if we are considering about the mechanism of drug interaction, देखिए अगर mechanism of drug interaction यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे इन विट्रो और इन विवो, इन विट्रो एंड इन वाइवो ये दोनों को हम कंसीडर कर सकते हैं. इन विट्रो अगर कंसीडर करें तो मतलब यहाँ पे क्या है, इन विट्रो मतलब आउटसाइड, तो दैट इज इनकॉम्पेटिबिलिटी और फार्मास्यूटिकल ड्रग इंटरेक्शन. दिस इज नोन एज अ इन विट्रो ड्रग इंटरेक्शन. यहाँ पे इसके अंदर में अगेन वी कैन क्लासिफाई देम फिजिकल इंटरेक्शन एंड केमिकल इंटरेक्शन. देन इन केस ऑफ इन वाइवो we can consider about the pharmacokinetic interaction and pharmacodynamic interaction. So here in this video we will discuss about the physical interaction and chemical interaction. See, physical interaction, this term specially we can apply when the physical state of either drug is altered when the chemical they are mixed. If we are considering, if we are mixing two products, that means in such a condition if we are mixing two chemical and due to that the physical state of any particular drug that has been there is a effect in particular physical state of one drug, then in such a condition or there is a alteration of
physical state of one drug, then in such a condition, such a interaction that is known as a physical interaction. For example, amphotericin. Amphotericin, it will precipitate if mixed with the normal saline. देखिए यहाँ पे एम्फोटेरिसिन को अगर नॉर्मल सलाइन के साथ मिक्स करेंगे देन इट विल गिव्स द प्रेसिपिटेशन बट इंस्टेड ऑफ हाई परसेंटेज डेक्सट्रोज, सो इट शुड बी मिक्स विद द हाई परसेंटेज डेक्सट्रोज, देन यहाँ पे प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। देखिए प्रेसिपिटेशन हुआ है मतलब क्या है, फिजिकल चेंज, फिजिकल स्टेट जो भी है वो चेंज हो गया है। सो वी नीड टू अवॉइड इट एंड सच अ condition or such a situation that is known as a physical interaction. Then chemical interaction. This term applies when the component of a drug mixture interact to form chemically altered product. अगर chemically altered कोई product form हो रही है, if you are mixing two components, then in such a condition, if there is a chemically altered product, then such a interaction that is known as a chemical interaction. For example, there are some example we can say methicillin and kanamycin, then furosemide and ascorbic acid, that is the example of the chemical interaction. In most cases, chemical incompatibilities are manifested by precipitation or color change. देखिए यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर हमें केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटीज है तो यहाँ पे पता चल जाएगा there might be the change in a color. So this is about the pharmaceutical drug interaction. So over here in this video we have discussed about the drug interaction, cause of drug interaction, then we discussed about the beneficial drug interaction, adverse drug interaction, then types of drug interaction, in that inhibiting drug interaction, potentiating drug interaction, modifying drug interaction, and mechanism of drug interaction. In mechanism we studied, we discussed about the physical interaction and chemical interaction. In next tutorial, next lecture, we will discuss about the in vivo. In that we will consider about the pharmacokinetic interaction and pharmacodynamic drug interaction. So here we discuss some important thing about the drug interaction. Thank you for watching this video.